हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा है। ट्रेडिंग स्पेशली चलना ही चाहिए। ओवरऑल कमोडिटी मार्केट स्पेशली डूइंग वेरी वेल। आई नो इक्विटीज मे नॉट बी डूइंग वेल फॉर दोज who are on the long side, but those who are on the short side, equities has done pretty well also. You can go to the short side via say options, via futures, etc. In this video, I'm going to do something different. I have been doing asset allocation video for the members. So मैंने सोचा कि इस बार कुछ अलग करते हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं ग्लोबल मास्टर एसआईपी क्रिएट करने वाला हूँ एंड आई मेंटेन एंड आई अपडेट अबाउट दिस एसआईपी ऑन अ रेगुलर वीकली बेसिस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रिएशन का जो वीडियो फर्स्ट, ये मैं थोड़ा हिंदी में बना रहा हूँ। मेकिंग दिस हिंदी में। देयर इज अ डिमांड फॉर हिंदी, सो हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके ये वीडियो बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग का फोकस है कि वेल्थ क्रिएशन, ओके, एंड ग्लोबल वेल्थ क्रिएशन। Why global wealth creation? Because we have to see the bigger picture. हमें बड़ा पिक्चर देखना पड़ेगा कि हम लोग जो देश में रहते हैं, इंडिया, it's a great country to be living in. I think it is the best country in the world to live in. But also कुछ realities हैं जो हमें देखना पड़ेगा। And one of them realities कि हम लोग एक depreciating currency में है। डिप्रिशिएटिंग करेंसी में जिसका वैल्यू कंटिन्यूअस बेसिस में चला जाता है। डिफरेंट फंडामेंटल रीजन है उसका। दोज हु हैव डन माय फंडामेंटल क्लासेस, यू नो क्यों ऐसा होता है। So we live in a depreciating currency, and this currency will continue to depreciate. Say previously, it was 40, then 50, 60. Those who were in my class early, आप लोग को याद होगा मैंने बोला था कि 65 से देखिएगा 75 जाएगा। जब 75 था मैंने बोला था देखिए 85 जाएगा। 85 से अभी 85 के पास है, देखिएगा ये 95 जाएगा। So that's how our currency will continue to gradually depreciate as long as जब तक ये fundamentals of currencies change नहीं होता। तो इसीलिए ग्लोबल पोर्टफोलियो और इसीलिए ग्लोबल वेल्थ बिल्डिंग। और ये वेल्थ बिल्डिंग के लिए मैं अपना एसेट एलोकेशन का जो स्ट्रेटेजी है उसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। And this will be a more passive approach rather than active trading, more passive approach towards wealth building. एंड आई थिंक ओवर टाइम ये एक्टिव ट्रेडर्स को भी बीट करेंगे, क्योंकि हम लोग पैसिव तो फुल्ली नहीं, मतलब आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एक स्ट्रेटेजी रहेगा, स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा रूल क्लियर कर लेते हैं बिफोर फर्स्ट रूल। रूल नंबर 1 कि किसी का सुन के ट्रेड या इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग मी। आप मेरा ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, दिस वीडियो इज फॉर माई कंजम्पशन। दिस रिमेन्स एज अ गाइड फॉर मी कि थ्रू आउट दिस इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट मैं भी करने वाला हूँ। तो इसीलिए ये गाइडेंस वीडियो रहेगा मेरे लिए कि मैं ये सोच रहा था, ताकि मैं पीछे जाके देख सकता हूँ। आई कैन गो बैक इन टाइम एंड ऑल्सो टू गाइड द स्टूडेंट्स हु आर यूजिंग द रेनबो सेटअप। इनिशियल मेकिंग वीडियोस, मतलब कैसे ही हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्या रूल्स है, ये वीडियोस आई एम गोइंग टू मेक फॉर जनरल पब्लिक। Then you can follow your own rule to continue with the portfolio. And I'll later videos I'll create for the members to keep updated on the portfolio. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को कुछ रूल चाहिए। आई थिंक आप लोग अब एक एक्सेल मेरा देख पा रहे होंगे। दिसका नाम मैं रख रहा हूं ग्लोबल मास्टर एसआईपी। सो दिस इज पार्ट 1 वीडियो ऑफ ग्लोबल मास्टर एसआईपी। सो ग्लोबल मास्टर एसआईपी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इज 1 to 3 month ट्रेजरी बॉन्ड्स, मतलब यूएस गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स। This is an interest income trade. This has no capital, means no risk is associated with this trade, except for the interest rate may go down and you may receive less amount of interest rates going forward. Next is U10. U10 is a long-term US Treasury bonds, that is 10-year Treasury bond. This gives capital gain. So this is part capital gain and part interest income. तो कैपिटल गेन भी देगा, ऑब्वियसली स्टॉक की तरह नहीं, बट ड्यूरिंग क्राइसिस पीरियड इट कैन गिव वेरी बिग रिटर्न।
फिर S&P 500, डाउ, नैस्डैक, इस तीनों में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं ये ETF, मतलब 1 to 3 month ट्रेजरी का ETF का नाम है BIL. Then we have U10, which is 10-year treasury. Then you have SPY, that is S&P 500, DIA, that is Dow Jones, Triple Q, that is Nasdaq. We will consider GLD as in gold and SLV as in silver. GLD दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड GLD, एंड SLV दुनिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट दिस सिल्वर फंड SLV. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग चूज कर रहे हैं. दीज आर द ओनली इंस्ट्रूमेंट्स दैट विल बी इन्वेस्टिंग इन बाय आवर रूल्स. तो रूल कुछ है, एवरी वीक ये इन्वेस्टमेंट करना होगा. 2 टाइप्स ऑफ रूल हम लोग रखे हैं. वन इज किस रेशियो में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, एंड क्या रूल होगा एंट्री एग्जिट का फ्रॉम ये स्विंग इन्वेस्टमेंट. And currently I have started with this ratio 25%, 15%, 10, 25% gold पे, 15% S&P 500, 10% DIA, 10% QQQ मतलब Nasdaq, 10% SLV silver, 15% is U10 and 15% BIL. तो यहां से बेसिकली एक रेशियो लेके मैं चालू किया हूं, बट फ्यूचर में जो रेशियो होगा हर वीक का, दैट विल बी बेस्ड ऑन ये फर्स्ट रूल, दैट विनर विल बी बेस्ड ऑन आवर एलोकेटर्स एज स्ट्रेटेजी. एंड ये जो रूल है, इस रूल के बेसिस पे, फॉलोइंग जो रूल है उस रूल के बेसिस पे हमें कितना रेशियो में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे ये डिसाइड करना पड़ेगा. आर वी क्लियर? आई थिंक सो. क्या क्या रूल्स हैं कि BIL और U10 दोनों मिला के पूरा पोर्टफोलियो जो इन्वेस्ट करेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे, देखिए 7 लाख अलाउड है पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर. हम लोग बाहर भेज सकते हैं विदाउट टैक्स इम्प्लीकेशन. तो हम लोग उसके अंदर ही रहेंगे, ये हर हफ्ता इन्वेस्ट करेंगे. सो दिस रूल प्रोबेबली आई हैव नॉट रिटन इट, सो आई विल राइट इट. Rule 8. Okay, this one I have highlighted. Rule number 7. Position to be taken every week and on the day जिस दिन हम लोग पोजीशन ले रहे हैं उस दिन उस सिक्योरिटी को पॉजिटिव होना पड़ेगा. अगर ऐसा नहीं हो रहा है, we might choose Friday as our day of investment. और अगर इन्वेस्टमेंट लायक है नहीं as per our rule, we will invest and keep the money in cash. Means we will not buy it, but we will allocate the money, keep it as cash. Currently U10 investment like है नहीं, so $15 every week हम लोग $100 करके इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है, $100 क्यों, इससे ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग दूसरा भी कुछ SIP चालू करने वाले हैं, which I will also share with you. And that will also I'll do for myself. So यहां पे क्या करेंगे, $100 पर वीक बेसिस पे हम लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे. एंड ये फंड ये आई एम एक्सपेक्टिंग टू क्लोज ऑन October 2027 एंड मैक्सिमम 1 साल का एक्सटेंशन हो सकता है October 2028. So by October 2028 we will close down this fund creation. So the 3 to 4 year horizon में we will continue to operate this fund. Next is SPY, DIA and QQQ, which are representative of equity as an asset class. This was bond. This is equity as an asset class. This will not cross 60%. GLD and SIA, which is more of a precious metal pack, which is a value holder baseline for our portfolio. This is should not cross above 45% as a whole. GLD cannot cross 35. And SLV, which is more risky, silver, that's why lower weightage, silver cannot cross 20%.
of the fund. So $100 में $20 maximum can go for silver. Each color category, look at the color category, gold, silver, then we have green color category, we have blue color category. Three type of category we have: gold or precious metal, equity and bonds. Each color category needs to get 15% minimum. Minimum in BIL is 10%. Every round 10% will go to BIL. Each subcategory means under the color category, each subcategory like GLD, SPY, DIA, QQQ will get 5% minimum, मतलब $5 each. And अगर वो security investment like है नहीं, if it's not investment worthy, then the amount that is to be invested will go into cash and hold. Every week we will continue to do this based on this ratio, and the winner will be decided based on allocator's age of my strategy. मेरा जो strategy है allocator's age, उस हिसाब से I'm going to decide. Now, what are the rules of entry exit? Either you'll have to use my Fountain of Gold setup, or you can use my Cloud Master. We will use only the weekly chart. We will not use any other chart but the weekly chart alone. And this SIP to be done on a weekly basis. SIP to be done if the short trend, which is जो लोग मेरे setup जानते हैं Fountain of Gold or the Cloud Master, if the short trend is bullish, the SIP is on, means we will buy whatever the price. We are not price sensitive. These are the rules. It has to be positive on the day when we are purchasing it, and the short trend has to be bullish in the weekly chart. 70% of the money, मान लेते हैं कि आज से 6 महीना बाद कि it turned bearish, each of the security, then 70% of that we will take away and put it in the cash under these categories, cash holding. Like currently 10-year treasury is not worth investment, so it is went into hold. Money getting accrued in category name, जो पैसा category में accrue हो रहा है, it will has to be invested when short-term trend once again turned bullish. Accrued money to be cleared in 3 installments. तीनों installment में ये जो पैसा accrue हो रहा है, 3 equal installment में जब clear हो जा रहा है green, we will start off and clear up the dues. So these are the simple entry and exit. I'll repeat. The SIP to be done if short trend is bullish, else no. If the short trend is bearish, 70% of the money invested has to be withdrawn. Now, there is no risk associated with BIL. So that means BIL is not falling under the category of withdrawal. BIL we say withdrawal nahi hoga. Let's put it in rule 8 so that we don't miss it. BIL has no price risk, no withdrawal. So BIL we can invest on a regular structure because it has particularly no risk associated with it. Now our rules of investments are broadly clear. Okay. I hope you are clear all about how I'm going to asset allocate into these categories.
And I am expecting to this portfolio to do very well in the next 4 years, as we will be active but somewhat in the long term managing it, rather than looking at in the daily chart. We are managing it via the weekly chart. The current investment in the October month, the October D1 represents the first down payments or installments. Then we have D2, D3, D4, like it will continue every week. This is, I've just taken a ratio to start with. Next week onwards, we will become more active in deciding what will be the ratio. Once it is decided, we will decide it by Wednesday. By Wednesday, by mid of the week, 3 days will be gone. Then we will decide from Wednesday, Thursday, and Friday onwards. We will look to take position in these securities. So that's all, friends, regarding this first part of Global Master SIP. The amount to be done in this first round of SIP, what I'm planning is 2 SIPs of special category like this for international wealth building and some money for trading as well. But these are the instruments we will largely focus for this Global Master SIP to be done $100 per week. So that's all, friends. Thank you so much. I hope this video you liked it. If you liked it, just put a thumbs up. All the best from my side. And as always, happy trading.